अभी आपने रणबीर को ट्रेन किया जी। फॉर एनिमल मूवी, जिन्होंने भी वो मूवी देखी है दे कैन सी कि कितना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन था रणबीर में. सो व्हाट एग्जैक्टली यू डिड विद हिम? So we finished to Juti Mein Makar and then he was at 71 kgs. Yeah. और फिर Animal के लिए he was at 82. So we've put on 11 kgs. That also took us a good 1 year. ये वही वाली चीज़ है ना कि ओवरनाइट नहीं होगा, बट जब 1 साल बाद आपको दिखेगा आप कुछ और बन चुके. Even the kids now लगे कर रहे हैं. They see other people with bodies and biceps and abs and they कि हाँ एक दिन ऐसा होगा. आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, अगले महीने नहीं होने वाला ये. और हर सेट के बीच में देखते हैं थोड़ा सा हल्का सा कुछ ना कुछ आ रहा है. पहले 1 महीना 2 महीना just spend on getting your technique right, your form right. सबसे पहले तो रेस्ट डेज कितने होने चाहिए? लाइक अगर एक वीक में हम कितने दिन है जो वर्कआउट करें, और रेस्ट डेज कितने होने चाहिए? ये रेस्ट और रिकवरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं. लोगों को लगता है नहीं, मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा, जितने ज़्यादा घंटे जिम में बिताऊंगा उतना जल्दी रिजल्ट्स आएंगे. वो गलत है. जब आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, बॉडी में 2 अलग फेजेस होते हैं. एक होता है कैटाबॉलिक फेज, एक होता है एनाबॉलिक फेज. कैटाबॉलिक फेज का मतलब वो है कि जहाँ चीज़ें टूटती हैं. तो व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, व्हेन यू आर ट्रेनिंग, व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट्स, your body is actually in a catabolic state, which means all the cells, the muscle tissues, everything are breaking down to release energy so that you can train. Right. The anabolic phase actually happens when you eat and when you sleep, when you rest. So that is why, of course, your nutrition is number one priority after training, making sure that you eat the right kind of nutrition. Okay. And getting the right amount of sleep or rest is important, because तभी जाके आपकी body जो आपने ट्रेन किया है वहाँ वो मसल्स रिपेयर हो पाएंगे, वहाँ रिकवरी हो पाएगी, वहाँ पर ग्रोथ होगा. नहीं तो आप यूल जस्ट कीप वंडरिंग कि यार मैं आई एम ट्रेनिंग 6 days 7 days a week, आई एम डूइंग सो मच, व्हाई इजंट माय बॉडी चेंजिंग. ऑल्सो फटीग जो होती है, अगेन इट slowly builds up. If there's no rest days, eventually, or maybe due to other aspects of life also, people can go through chronic fatigue. Then it hits a point where your body just never recovers. Really? You wake up tired, you're always tired, body में energy नहीं है, and that takes a very long time to recover from. And so it should be done in a regular interval. So normally we say 3 days on, 1 day off. बहुत लोग के लिए, कोई लोग होते हैं बोलते सर मैं वीकेंड पे I'd like to spend time with the family. Okay, then train from Monday to Friday, take the Saturday, Sunday off. Is that okay? Like Absolutely. if they train for 5 days regular and then they... See, everybody's body is completely different. ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो 1 day work 1 day rest, 1 day work 1 day rest करते हैं. ऐसे बहुत हैं जो 3 दिन हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन वर्कआउट करते हैं. And their body responds. So this is just a personal choice, या फिर ये डिपेंड करता है हमारा गोल क्या है? For the average person, at least 2 days of rest is good. Is recommended. Also depending on the intensity. अगर आप बहुत hard train कर रहे हो, then I would suggest कि every 3rd day or after every 3 days you take a day off. Okay. If you're a beginner, you're not really reached that intensity part yet. तो मैं beginners को 3 चीज़ बोलता हूँ. When you enter the gym, there are 3 things that you have to focus on. First is your technique and form. पहले 1 महीना 2 महीना just spend on getting your technique right, your form right. Should be right. It has to be. आपको लाइफ पर ट्रेनर के साथ काम नहीं करना है, मत करो, बट पहले के 2-3 महीने तो आप उतना टाइम इन्वेस्ट करो कि एटलीस्ट वो जो आप सीख रहे हो सही से सीखो. उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी. जिसका मतलब है कि आपका जो फर्स्ट रेप है, अगर मैं आपको 100 रेप कराऊं, आपका फर्स्ट रेप और 100 रेप looks exactly the same. Okay. Of course, there will be muscle fatigue, but range of motion. But range of motion, the form, the technique should be precise from first rep to the 100th rep. मतलब मैं अगर आपको रात को भी नींद में से उठाऊं, बोलूं पुश अप करो, तो you know exactly
By default, your hands go in the right position, feet go in the right position, you're able to do a push-up. Yeah. Then comes intensity. Okay. Then you will start adding weights, you'll go heavier, you'll do more sets, you'll Okay. do more volume. Okay. तो ये जो फॉर्म वाला फेज और जो कंसिस्टेंसी वाला फेज है, that's not going to be very intense for a beginner. तो Yeah. वहाँ पर अगर somebody even trains for 6 days, Yeah. it will be fine. Okay. Again, I don't know the person, they know themselves better. अगर कभी बॉडी बोलती है कि आज थोड़ा थका हुआ हूँ, Yeah. don't force it. Okay. Take a break, take a rest. Okay. Some days it's absolutely fine to take a rest. And ऐसे नहीं है कि every day you'll wake up and the body will feel great. Some days you won't feel that good. और अगर जिम जाना ही है और अपना 100% देना ही है, तो उस दिन रेस्ट ले लो. उस दिन maybe go for a walk, मसाज ले लो. Just do an activity which is not maybe as strenuous. Yes, yeah. Or maybe just do some like deep stretching. Stretching कर लो, योगा कर लो. Maybe don't do anything. Yeah, yeah. तो वो सब ये सब these are things which as a beginner बट अगर हम एक जेनेरिक बात करें तो हफ्ते में अगर आप 2 दिन का ब्रेक लेते हो और it's ideal, it's good. 5 days अगर आप जाते हो Yeah. वर्कआउट करते हो, इट्स आइडियल. Correct. सो आई फॉलो मंडे टू फ्राइडे आई एम रेगुलर Perfect. एंड सैटरडे संडे आई टेक अ ब्रेक Perfect. एंड दैट एक्चुअली रेजुविनेट्स मी एंड मैं पूरी तरह रिलैक्स फील करती हूँ. मंडे आई एम इक्वली लाइक सेम Exactly. मोटिवेटेड टू हिट द जिम अगेन. Correct. See, because again आपने बोला मेरे लिए. हाँ, सो मेरे लिए दिस वर्क्स. Exactly. Yeah. So that word is very important. People need to understand कि there हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ये बेसिक फाउंडेशंस और फंडामेंटल्स हैं. ट्रू. ये फंडामेंटल्स और ये फाउंडेशंस को माइंड में रखते हुए अभी आप अपनी रूटीन बनाओ. या अगर like you said, you know, if that person is working 10 hours, 8 hours shift, 9 hours, whatever, 12 hours shifts, needs to spend time at home, एग्जैक्टली. he might not be able to spend an hour. I tell people working out for an hour is a luxury. It Not is. everyone can afford that luxury. And science has proven that if somebody wants the health benefits of exercise, even 2 to 3 days of 30 minutes of weight training will give you that benefit. Aesthetically, you might not reach that goal faster. But in order to be fit, Yes, to be healthy, yeah, it will help. So for a lot of people out there, I know IT industry hai, government jobs hai, there are even entrepreneurs who've maybe started their own business. They might not get an hour to train. सबके बिल्डिंग में जिम नहीं होता, सबके घर में जिम नहीं होता, किसी को 10-15 मिनट इजीली ट्रैवल करना पड़ता है. तो taking everything into consideration, so ideally around it it. is said that if you do any kind of physical activity for 150 minutes or Correct. between 150 minutes to 200 minutes in a week, you are like active. 200 you are moderately active and 300 or more you are I good active. see, इसमें वापस एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है. आप अपने कुत्ते को भी वॉक पे लेके जाओगे तो वो एक्टिविटी है, बट वो एक्टिविटी से कुछ कुछ एस्थेटिक yeah. बेनिफिट्स नहीं आने वाली. सो वेयर दे से बी एक्टिव, Yeah. yes you definitely, and this the 10,000 steps का जो ये जो निकला है recently, it is mainly to get people to be active. कि आप जिम नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, no problem, get your 10,000 steps. वो थोड़ा Because the- गेमिफाई कर दिया उसको. Correct. That 10,000 steps definitely will see, because health-wise, heart needs to work, joints need to work, everything needs to work. That movement definitely causes some benefits inside the body. तो इसीलिए वो एक्टिविटी के लिए बोला है कि 10,000 steps करो. For the average person, activity has to be there, movement has to be there. लेकिन that's not the complete picture. India, as a majority of the population in the world, is one of the biggest populations that is technically not healthy because of no weight training. These are all proper facts which are there. So unfortunate. But you'll be surprised. We were in Hyderabad. We were in some really small town, and I showed Vrinda a gym. This gym was like had a glass door. It was a very small town. Or there was this lady training in her salwar kameez and sari and everything. I mean, जहाँ पर लोगों को करना है वहाँ लोग करते हैं.
अनफॉर्चुनेट की कोई बात नहीं है इसमें. There are people who understand the benefit of weight training. They've Exactly. experienced it. They've seen it. They Yeah. can use logic and justify it. Justify it, right? We just need to get out to the public and say कि घर पे लाओ ना डम्बल्स, थोड़ा सा बाइसेप करो, Exactly. थोड़े से स्क्वाट्स करो. Or it does not even require so many equipments. Nothing. Basic simple dumbbells, a resistant band Correct. will do the job. And then when you're doing say 15 minutes of weight training along with 150 minutes of activity, Yeah. and now this 15 minutes can be included in that 150 minutes, तो बाकी बचा, you go for a walk, you go cycle with your friends or whatever, you play a little bit of a sport, pickleball, जो भी आपको खेलना खेल लिया. Now you can say that somewhere your physical need to be healthy is somewhere complete. Somewhere met. Okay. But weight training is a very, very crucial part because muscle plays a very important role in general health, Yeah. in longevity, in blood pressure control, in insulin sensitivity, in blood glucose levels, maintaining blood glucose levels, heart health, bone density, everything. There's so much Everything. more.